Okay, keep reading. Dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. So ये वाला हम लोग काइनेमेटिक्स भी स्टडीड इन द मोशन ने प्लेन में, वो उसका हो गया. तो डायनेमिक्स में व्हाट वी स्टडी मेजरली अबाउट फोर्स के बारे में पढ़ने वाला है. विच फोर्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली एक्टिंग, राइट. चलो, so first we'll study about the centripetal force. Centripetal force means whenever a particle is rotating around the circular path, the direction will change. And the direction change होने से acceleration is produced, right? Direction of velocity will change. Acceleration produced. That acceleration is called centripetal acceleration. उसके वजह से there is a force, right? Force acting. That force is called centripetal force. Okay. So it is a force required to keep the body in uniform circular motion. And this force changes the direction of linear velocity and but not magnitude. So this force is responsible to change the direction of linear velocity. Magnitude change नहीं कर सकते. A centripetal acceleration. So formula will be, क्या formula है? mv square by r. F equal to ma, right? So A already you know, that is mv square by r is the formula. Centripetal force का formula है mv square by r. If I substitute v equal to r omega, m r omega square. Very important formula. Whenever they given in angular velocity terms, may use mr omega square. If they tell in terms of linear velocity, use mv square by r. This is the formula. Centripetal acceleration का formula में you know, right? V square by r, r omega square. M लगाना इधर से, m v square by r, because m है, right? Direction मालूम है, direction is always towards the center. Centripetal force acting always towards the center. So velocity direction change होता जाएगा. Okay, copy it. Okay. Now you have to understand some things. देखो, examples taking. Some force should act like centripetal force, right? Centripetal force so always center seeking force only, active हो रहा है, but some force should act like centripetal force. Example we'll see. Just short form में लिख लो. When electron moves around the nucleus of a circular orbit, then which force is acting towards the center? Electrostatic force. Electrostatic force. When the electron is revolving around the circular orbits with some velocity, electrostatic force is acting. Okay. This electrostatic force is always act like centripetal force. That means simply I have to equate electrostatic force is equal to centripetal force, and therefore electrostatic force का formula is mv square by r. तो प्रॉब्लम्स करने सब में आपको कैसे यूज करेंगे? सम फोर्स शुड एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट करने का. यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट. सपोज मान लो द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द sun or earth is revolving around the sun. Tell me which force is acting towards center? Which force is acting like centripetal force? Gravitational force. That time I have to equate what? Gravitational force is equal to mv square by r. We have to equate. Okay. Short form में लिखो. Second example. When planet of mass m moves around the sun in a circular orbit of radius r, the centripetal force of the orbit is simply gravitational force. We can equate centripetal force is equal to gravitational force. And you know gravitational force का formula मालूम है ना, 9th class में पढ़ा ना, capital G m1 m2 by r square. So to equate with this, net force acting towards center is always, ये sentence आपको याद रखना पड़ेगा always. Net force acting towards center always equal to centripetal force. So many questions you can solve by this statement.
पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस कैन एक्ट. नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. एक सॉल्व करके ऐसा दे विल आस्क सम मास पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, ऐसा पूछेगा तो वी हैव टू इक्वेट दैट्स इट सिंपली. ओके, वन मोर एग्जांपल ले लेंगे. Finished. Net force acting towards center is always equal to. Yes, sir. Okay. When a stone is, I took a stone, I tied with the string, I rotated. Now, which force is acting towards center? Which force is acting like centripetal force? Tension. Tension mg. force. So simply आपको आपको क्या करेंगे? T is equal to mv square by r से इक्वेट करने. क्वेश्चंस करने का. So that's why अंडरस्टैंड करो अभी. Net force acting towards center is always equal to mv square by r or mr omega square, right? Whenever they given in terms of angular velocity, mr omega square से इक्वेट करो, नहीं तो mv square by r से इक्वेट करो. Done ना? Understand it? Yeah. चलो. So tension is always equal to mv square by r. Short form and there will go. ये हम डिस्कस करेंगे based on this models का. Okay? चलो. The centripetal force required by the 1000 kg car takes a turn of radius this much at a speed of 36 kilometers per hour. He's asking what is the centripetal force only. Okay? 1000 kg कार है. Takes a turn of radius, इसका radius है 50 meters So 2000 newtons. at a speed of 336 kilometers. मतलब convert into meters per second. 10. So it is 10 meters per second से जा रहा है. He's asking centripetal force is how much? Sir, 2000 newtons. देखिए हो गया 2000 है. हाँ, which formula you use? mv square by r. So we can calculate, right? So answer is option number 4. Right. Next करो. A stone of this much is attached to a string of length L and whirled in the horizontal circle. The string can withstand a tension. Tension डायरेक्टली दे दिया. The maximum velocity with which the stone can be whirled. So stone को घुमाने समय which one is acting like a centripetal force? Tension is equal to mv square by r. Equate that one and try to find v. Sir, 6. 6 Yeah, 6. Yes. Option 1 is yes. Okay. चलो. एक फेरिस व्हील है, ऊपर से जेंट व्हील है, घूमता जा रहा है. The child moves in a vertical circle of radius capital R. Okay. Speed with velocity v. Determine the force exerted by the seat on the child at the bottom and top of the. So this is just like a direct formula. What direct formula? कुछ direct formula नहीं है. Always So don't remember something. at the top will be mv square by r plus mg and bottom is mv square by r. And always use the concept and solve. अभी याद रहेगा, but again future में भूलने के chances है. So I just told to remember it. Yeah, no problem. Remember, no problem. Okay, करो. Bottom को देखो. What is the force acting? He's asking determine the force exerted by the seat on the child. Seat on the child at the bottom of, मतलब normal action is asking. Okay. So what are the forces acting on the downwards bottom में? Downwards is mg. And ऊपर normal action. Centripetal. Now net force acting towards center is equal to centripetal force, right? Net force is how much? N minus mg. N minus mg, because अंदर का acceleration इस तरफ रहेगा. That's why उस direction positive. N minus mg is equal to mv square by r. So therefore n is equal to mg plus mv square by r is the formula. आया? तो सेम वे टॉप में करो. Sir, but won't the V be V cos theta?
Accelerated नहीं नहीं, ऊपर components. ऊपर में टॉप में टेलिंग, Yeah. टॉप में देखो, व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एन ऊपर, mg डाउनवर्ड्स, सो नेट फोर्स कौन सा एक्सेलरेशन विल बी Sir, over here, does the normal act like the centripetal force? No, right? सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल एक्शन नहीं है, mg इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब नेट फोर्स लेने का, ऑलवेज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर लेने का, नॉट सिंगल फोर्स। ओके, टेल मी उसको टॉप में, ये बॉटम में, टॉप में V square by R plus mg. mg minus n, net force towards center is equal to mv square by r, therefore mg minus mv square by r is equal to n। देखो बॉटम में आपको वेट mg नॉर्मल वेट से ज्यादा है, बट टॉप में देखो आपको वेटलेसनेस के लिए, मतलब वेट ओरिजिनल वेट से कम हो रहा है ना, नॉर्मल एक्शन उसको वेटलेस गया, कभी जेंट फील्ड में गया, ऊपर गया फिर कमिंग कैसे फील हो रहा है, वेटलेसनेस हो रहा है तो आइए किधर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा बोल के लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, चलो, सो ऑलवेज कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में विच फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, करो, a block of mass 1 kg is tied with a string of length 1 meter, ये string से attached है, 1 meter length है, other end which is fixed, ये fixed है, center में fixed है। okay, the block is moved around the smooth horizontal table, horizontal में zoom 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 बोल के I am moving with velocity 10 meters per second, Sir, 100. is asking the find the tension of the string, 100. Tension force is acting like a centripetal force, so equate, So I have a doubt, sir. yeah, tell me, So for all these questions, the velocity will be like in the tangent area. always tangent only, always, मतलब radius and velocity is always perpendicular। Okay, sir. Okay. Suppose if I leave, what will happen? If I leave, it will fly away with tangentially to the circle only. कितना आया कृष्णा? 100 आया? mv square by r यूज कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट है करो, तो डायग्रामेटिकल दिया, a ball of mass m moves with a speed v against a smooth fixed vertical circular groove। देखो एक ग्रू है, ग्रू के अंदर में बॉल घूम रहे हैं, एक ऐसा पट्टी है उसमें बॉल इज रोटेटिंग, ऐसा पट्टी में सर्कुलर ग्रूव में। ओके, उसका रेडियस इज आर है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल, इसके ऊपर देखो वॉल इज अप्लाइंग ए नॉर्मल एक्शन, राइट, ये वाला नॉर्मल एक्शन इज आस्किंग नॉर्मल एक्शन इज हाउ मच। ओके, and the normal action of the vertical wall on the ball and normal action of the floor on the ball, मतलब floor is also applying a normal action, right? So he's asking that floor का and wall का दोनों का normal action, so floor का F, wall का W, find करो। Sir, isn't it? Sir, it's easy. Sir, they gave the diagram on the right, no, sir. I just yeah, used- tell the answer, I got the answer. It's easy. yeah, let them tell, The let them floor, tell, the normal reaction of the floor is mg, and the normal reaction of the vertical centripetal force. yes, mv square by r. m square। So normal reaction of the floor on the ball, ball के ऊपर normal reaction floor कितना act हो रहा है, so downwards is mg, right? So क्या simply equate upward force to downward force, so normal reaction of the floor is equal to mg, the first one। normal action of the vertical wall on the ball, vertical wall on the ball, normal action कौन सा है, this force acting like centripetal force, so normal action कितना होगा, nw is mv square by r, this is answer। तो क्या रहा, easy, right? चलो नेक्स्ट करो, a block of mass small m है, is kept on the edge of the horizontal turntable of radius r which is rotating with a constant angular velocity omega, omega से घूमता जा रहा है, इसका फ्रिक्शन भी दिया है mu and here mass है m। okay, find the friction force between the block and the table, friction force चाहिए, so that should not fly away, कितना फ्रिक्शन एक्ट होगा, here block किस वजह से it is stopping, which because of what rotating, right, rotating के वजह, but which force के वजह से it is stopping, the block is not moving away, which कौन सा force पकड़ के रख रहा है, friction, that is acting like a centripetal force, right? equate, tell the answer in terms of omega में equate, The friction is acting as centripetal force. friction is acting like centripetal force,
Sir, how, sir? I don't In understand. how? See, मतलब देखो, the block is staying on the surface, right? Yeah, Why it is staying? Why it is staying? because Tell of me. friction force pushing it फ्रिक्शन, backwards. वो पकड़ के है। अगर ज्यादा स्पीड में घुमाए तो क्या होगा? द फ्रिक्शन से ज्यादा वो फोर्स बाहर की तरफ Yeah, लगेगा move. एंड Yeah, फ्लाई yeah, अवे। yeah, yeah. ओके, सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज हेल्पिंग टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर वाला। Okay. तो आंसर इज So then I got the answer as m r omega square. खत्म। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज आंसर। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा पूछा, दैट्स व्हाई एम आर ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन? फ्रिक्शन दे विल गिव वैल्यूज, मींस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। ओके, ट्राई करो। इजी, ट्राई। Sir, Kushal mv will tell. square Like by. Kushal will tell. रुको, फिर बोले तो सब लोग को बोले तो। So won't it be N minus mg is equal to centripetal force? N minus mg is equal to centripetal force. Sure? A car So of moving over the convex bridge of radius r. Find the normal action acting on the car. This normal action is asking when it is yeah. at the highest point. Oh, they are norm. Yeah. Sir, I got it. Tell me, n equal how much, Pratik, Pranav? Sir, I'm getting mg plus mv square by r. Okay, tell me which force is acting like centripetal force here? Net force कितना है? mg, mg minus n ना, n minus mg है? n minus mg. No, acceleration will be all. See, this is circle path, right? Acceleration is always towards center. So Oh, this minus this, Sir, won't it be mg mv square by r minus mg? minus n is equal to mv square by r. So a Sir, smaller but here, smaller. technically, sir, isn't mv square by r greater than mg? mv square by r is greater than mg. Why? Sir, because no, if you put any value, you'll get mv square by r always greater than mg. Because वो if you substitute, you might get negative value of normal, right? वो देखेंगे, वेलोसिटी वगैरह देखेंगे, बट क्या है बोल तो नॉर्मल एक्शन इज mg minus mv square by r is the answer. Okay. Net force is always towards the center. Net force acting is equal to mv square by centripetal force. Okay, now try करो। now downward से जा रहे हैं। now find the normal action. Find the normal action acting on the car when it is at lowest point. So Sir, net force acting towards center is n minus mg. mg is equal to mv square by r. So therefore n is equal to mg plus mv square by r. So या चलो एक क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन। डायग्राम दे दिया सब आपको, इजी हो जाएगा। हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। हेमिस्फेरिकल बॉल इज देयर, इज सेट टू रोटेट अबाउट द एक्सिस सिमेट्री। बॉल को मैं रोटेट करूंगा। ए स्मॉल ब्लॉक केप्ट इन द बॉल रोटेट्स विद द बॉल विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस। मैं क्या करूंगा, स्मॉल बॉल इज देयर, स्मॉल, मैं एक बड़ा बॉल को ऐसा रोटेट करूंगा, स्मॉल बॉल जुम 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 बोल के रोटेट हो रहा है। ओके, without slipping on the surface. If the surface of the ball is smooth, an angle made by the radius through the block with the vertical axis is theta. Now मैं जाके ब्लॉक मान लो इधर है, इनिशियली ब्लॉक इज हियर, घूमते जा रहे हैं इस रोटेट में। ये कितना वर्टिकल से कितना एंगल है, ये वाला ब्लॉक इस एंगल थीटा, थीटा एंगल में है। उधर रुका तो घूमते जा रहे हैं उधर उस एंगल में। ओके, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग। ही इज आस्किंग ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा इज हाउ मच। ओके, सो आपको ओमेगा फाइंड करने का, उसके वजह से आपको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ टेल मी, इस So the बॉल के ऊपर व्हाट centripetal आर द फोर्स force एक्टिंग? be. So we have one centripetal force be n sin theta. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट हियर? mg, one is normal action, right? Surface is exerting normal action like this, and this vertical is theta na, ab theta, alternate angles. Now n का if I take components n cos theta and take the components n sin theta, दो components लिया। Now which force is acting like centripetal force? N sin theta is acting like a centripetal force. And now equate n sin theta is equal to n sin theta
इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा में एम आर, आर इज व्हाट, कैपिटल आर नहीं लेने का, स्मॉल आर लेने का, दैट इज इंपॉर्टेंट। पीपल क्या करेंगे, कैपिटल आर लेने का, बिकॉज छोटे सर्किल में घूम रहे, बड़ा सर्किल में नहीं घूम रहे, दैट वन। ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर, So बट then for आर the हम लोग angular लिया, speed, for the आर हम angular लोग, speed, हाँ आंसर no, so let me, I got the normal V, but then for the आई angular वांट speed, what ओमेगा, do I आई got? वांट, So I got the normal V as root gr tan theta. okay, but he's asking angular speed at omega, I want. Yeah, exactly. So how do I calculate? I can wait 1 second. देखो, now I am writing centripetal force is mr omega square, but r we put, r is not, we don't know, capital R is given, so we have to bring smaller in terms of capital R. So कैसे आएगा, this is a capital R, right? So r का cos theta, r sin theta, right? So therefore small r is nothing but r sin theta. मालूम पड़ा ये वाला components I am taking, r का इस तरफ component is r cos theta, इस तरफ component is r sin theta, which is exactly equal to smaller, right? समझ में आया ये वाला, components निकाला, okay? So Yes, that therefore is r sin theta. Yeah. otherwise if you can take sin theta also, sin theta is Geometry, right yeah. angle triangle में opposite by hypotenuse also you can take, okay? So now substitute करो, n sin theta is equal to m r sin theta omega square. Now sin theta cancel, so n by m r is equal to omega square. Sir, Okay, why can't we take the big capital R? हाँ Why can't we take capital R? कैपिटल वेटिंग, हाँ ये ब्लॉक इज रोटेटिंग इन स्मॉल सर्किल में, ये बड़ा सर्किल में नहीं घूमेगा, नीचे घूम रहे ना बॉल का नीचे, दैट रेडियस यू शुड टेक। ही डिड नॉट टोल्ड मैक्सिमम ऊपर तक आकर रोटेट किया, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम स्पीड बोले तो ऊपर तक आएगा, बट नहीं है नीचे वाला। ओके, हाँ नाउ Yes, sir. n इज व्हाट हियर, one more thing also you can write, n cos theta is equal to, see before substituting, n cos theta is equal to mg. mg. So I got omega as root gr tan theta by r, like the small. Hmm? So I got omega as root gr tan theta by r, like the small r. I want omega directly under cos theta capital R G में आएगा। Cos theta capital R g. So I'm getting sin theta also. ओके देखेंगे, देखो एन आर का, देखो फ्रॉम दिस व्हाट इज द इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम दिस, n इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, आपको फर्स्ट इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन क्या है, n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी आया। नाउ डिवाइड करो, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ओमेगा चाहिए ना, I got it. तो एन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू एम कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी आएगा, सो देयरफॉर जी बाई आर cos थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा, दिस आंसर। तो मैं कृष्णा शुड़ा, आपको बॉल घूमने समय इज नॉट टेलिंग दैट मैक्सिमम ऊपर तक आ गया, बोलो नहीं बोला, सो वी शुड टेक द स्मॉल रेडियस। देखो व्हेन द बॉल इज हियर, दिस इज नॉट कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, सम रेडियस, दैट रेडियस वी आर टेकिंग इन I got it as root gr by r cos theta. जी स्मॉल आर, No, capital R. जी आर बाय cos थीटा, नो भाई किधर, इधर ये इक्वेशन आया पहले आपको, Yeah. n इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आया, So what it was, I wrote it as n sin theta equal to mv square by r and n cos theta equal to mg. Then I wrote m as n cos theta by g, and then when I ऑलवेज याद रखो, व्हेन दे गिवन ओमेगा, ओमेगा टर्म्स में लिखो, अगेन कन्वर्शन क्यों करने का, ओमेगा टर्म्स में लिखो ऑलवेज, दे विल मेंशन ओमेगा से घूम रहे हैं, आंसर विल आल्सो बी ओमेगा ओनली। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जाएंगे, सम एप्लीकेशंस आर देयर, कौन सा एप्लीकेशंस आर देयर सेंट्रीपिटल फोर्स में, वी हैव सम कोनिकल पेंडुलम वगैरह एप्लीकेशंस आर देयर, कोनिकल पेंडुलम, ये एप्लीकेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। देखो कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोनिकल पेंडुलम मींस, कोनिकल पेंडुलम मींस द पेंडुलम है, मैं ऐसा ऐसा घूमता जा रहा हूँ, ओके कोन जैसा बनेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम इफ यू सी फ्रॉम द टॉप व्यू में बॉब को ऐसे रोटेट करूंगा, इफ यू सी दैट इज लुकिंग लाइक कोन, जैसे कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड वी वांट टू कैलकुलेट बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके देखो ये इनिशियली बॉब है,
बॉब को मैं ऐसा घुमाता जाऊं, जुम 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 बोलते हो, आफ्टर सर्टेन टाइम के आपको आपको दिखेगा कोन जैसा दिखेगा, कोनिकल पेंडुलम में. ओके. आवर इंटेंशन इज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. सो याद रखो, वेन एवर टाइम पीरियड देर आस्किंग, आपको ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा. भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 pi by t, and therefore t is equal to 2 pi by omega. Always whenever they are telling to find time period, omega find करो, angular speed find करो, then substitute here, we'll get the time period. Okay. चलो. When the particle is here, when the particle is here, tell me इसका what are the force acting on it? One is mg, one is tension. उसका लेंथ है L है ना. Okay. Now this is theta vertical से, this is also theta. Now I took the components t cos theta, t sin theta. Same method. By using centripetal force concept use करके solve करेंगे. And now tell me which equate करो. T sin theta is acting like a centripetal force. And it is I want in terms of omega में. Omega चाहिए ना टाइम पीरियड आने के लिए, ओमेगा. सो सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर. एंड अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, t cos theta is equal to mg. So if I divide 1 and 2, if I divide 1 and 2, tan theta is equal to, see, ये small mg ले लो, हो जाएगा small mg, ये small m. Okay. So Same tan particular. theta is So r r omega square by g. omega square by g. So does Okay. this work for every conical pendulum question? कोनिकल पेंडुलम में यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g or tan theta. g tan theta by r, right? What? g tan theta, g by. Yeah. Wait, 1 second. G tan. Yeah. ओके. हियर प्रॉब्लम क्या है आपको, r. ओके. बट आई वांट इन टर्म्स ऑफ r को भी विल चेंज. हियर r को भी विल चेंज इन टर्म्स ऑफ लेंथ में, बिकॉज आई वांट इन टर्म्स ऑफ लेंथ में. ओके. सो लेंथ में कैसे फाइंड करें, टेल मी. r इन टर्म्स ऑफ लेंथ में हाउ टू फाइंड, टेल मी. इज अ लेंथ Sir, L. wait, sir. 1 second. 1 second. Yeah. So 1 second, sir. L sin theta. L sin theta. L sin theta. Good. So substitute करो. R is equal to L sin theta. Because if I take this right angle triangle, theta, L, R. So R is equal to L sin theta आएगा. Now substitute here. Omega is equal to under root G tan theta is nothing but sin theta by cos theta. ठीक है. Tan theta by L sin theta. So क्या आएगा? साइन बाय साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे कॉस आएगा ना. सो क्या बचेगा, अंडर रूट G by cos. बाई एल कॉस थीटा. Yeah. ना ओमेगा आ गया. टाइम पीरियड कैसे आएगा, टी इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, मीन्स उल्टा है तो अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी. टाइम पीरियड. So does this formula work for every question? देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला याद है Yeah. Yeah. No. कितना, 2 pi root L by G cos theta. एल बाई जी कॉस्ट नहीं, 2 रूट एल बाई जी. नॉर्मल पेंडुलम क्लॉक Yeah. घूमने समय टाइम पीरियड इज ऑलवेज 2 रूट एल बाई जी. Okay, this is a formula we have to remember always. 2 pi under root L by G. Here L is what in this case में, L is what, vertical length लेने का always, vertical length only. Okay. Now if you see carefully, इसका vertical length कितना होगा, vertical length, इसका vertical length is how much, L का component निकालो. What is L का component will be L cos theta. देखो, that's why 2 pi under root L के जगह में L cos theta by G. This is a way to remember. Time period of a conical pendulum, I am telling how to remember that instead of taking either normal pendulum में L by G, right, formula, ये तो famous formula है. L के जगह में here L का vertical length लेना है. vertical length कैसे आएगा, L का इस तरफ component will be L cos theta. That's why under root L के जगह में L cos theta by G. Okay, so 2 pi under root L cos theta by G formula याद रख लो in a conical pendulum. This is the first application. Different applications we have to see, that's it, by using centripetal force ka. So here we use the centripetal force ka concept, right, mr omega square. Okay, chalo, copy it. Next one, I took this one. Okay, chalo. Next one is
फाइंड द डेथ साइक्लिस्ट प्रॉब्लम डेथ वेल, ये याद है डेथ वेल मीन्स? डेथ वेल सुना कृष्णा? No, sir. डेथ वेल मीन्स सी एक वेल रहेगा इतना रूम जैसा रहेगा, बाइकर्स को बोलेगा आपको ऐसा वर्टिकली वॉल के तरफ घूमने घूमने का, अगर मर गया वो मर गया खत्म, दैट इज कॉल्ड डेथ वेल, दैट इज अ चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। ओके, सो आप क्या करेगा उसको, आप क्या करेगा उसको, व्हेन यू सपोज यू आर ऑर्गेनाइजिंग दैट वन So डेथ it'll वेल reduce को, the speed. reduce the speed तो गिर जाएगा। सो यू हैव टू फर्स्ट ओनली डिजाइन दैट इतना मैक्सिमम स्पीड यू हैव टू गो, अगर उसके कम स्पीड गया फ्रॉम देयर से फेल डाउन, बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा। कभी देखो यूट्यूब में सर्च करे तो भी समझ में आएगा, डेथ वेल को जूम 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 बोल के घूमेगा बड़े बड़े में, बाहर भी ऐसे आएगा, दे वांट टू कम आउटसाइड आल्सो, धीरे धीरे ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के बाहर आ जाएगा। ओके, सो अगर ये मैक्सिमम स्पीड वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दैट, वो मैक्सिमम स्पीड से वी विल टेक ए साइन आल्सो, द प्लेयर्स के साथ विल टेक ए साइन आल्सो, इतना स्पीड से कम नहीं होने का, नहीं तो मर जाएगा, मरने के से हमारा कुछ गलती नहीं है बोल के दे विल पुट ए साइन, दैट मच इंपॉर्टेंट। सो आपको पहले से डिजाइन करना पड़ेगा कितना स्पीड तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल सी बाय यूजिंग सेंट्रिपेटल फोर्स का। ओके, यू टेल मी minimum speed we have to find, that should not fall, maximum speed means it can be anything, right? It can be so much 1000 speed जाओ 2000 speed ऐसा नहीं है, minimum speed we have to find so that it should not fall. Okay, now this is a bike, बाइक है, जुम 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 बोल के, इसके इसके ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्टर है, और इज नॉर्मल एक्शन, वन इज mg एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिकॉज अपोज द मोशन, राइट, अपोज द फोर्स का फ्रिक्शन। नाउ टेल मी, आपको स्पीड फाइंड करने के लिए which force is acting towards center? Normal. Normal action, so n is equal to mv square by r, radius is r. Okay, now tell me, आपको bike should not fall down, that means what is the condition should be there, friction should be greater than equal to mg, then only it will stop, right? Friction will help not to fall down, right? Friction should be greater than equal to mg, so always आपको minimum speed maximum speed means आपको check करना पड़ेगा which one is greater। देखो friction should be greater than equal to mg, then only the bike will stop, otherwise नीचे गिर जाएगा। now substitute formula here, friction का formula क्या है, mu n is greater than equal to mg, so n के जगह में substitute करो, mu into mv square by r is greater than equal to mg, so mm cancel, so our interest is to calculate the v square is greater than equal to r g GR by mu. by mu, gr by mu, so there what is the minimum speed that time, tell me, v minimum is equal to होगा ना, Equal to under root root GR by mu. gr by mu, this is the minimum, मतलब g मालूम है, radius of the room मालूम है, and mu मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो सब कैलकुलेट करने से आपको स्पीड आएगा, देन बाइकर को बोलेगा इतना स्पीड से कम कभी भी नहीं होने का, दैट इज द प्रैक्टिस दे हैव टू मेक, उससे ज्यादा नो प्रॉब्लम, बट उससे कम स्पीड गया खलास, डेथ वेल बोलते हैं उसको, बहुत जन मर गया ऐसा ही। ओके, अगर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बोले तो आपको क्या करने का, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बोले तो सिंपली इक्वेट हियर m ओमेगा स्क्वायर, Omega square. m r ओमेगा स्क्वायर यूज करके सॉल्व किया तो आ जाएगा। ओके, मेथड समझो, so, क्या क्या फॉर्मूला है, आई विल गिव देम फॉर्मूला शीट में। ओके, तो मैं Or sir, सेंट्रीपिटल, can't we just do it by divide? Like we got v minimum as root gr by mu, right? So can't we just divide it by r for omega? या फ्रॉम देयर यू कैन गेट, बट सम को ट्रिक्स दिया तभी आपको थोड़ा मेथड से समझो आ जाएगा। ओके, ओके, नाउ दिस एप्लीकेशन समझ में है, दो एप्लीकेशन सीखा है कपल, आई विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आल्सो। कभी देखा आपको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए साइकिल को कंपल्सरी थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, वर्टिकल से सम एंगल थीटा में आपको बेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट स्टे इन सर्कुलर पाथ। कभी भी देखो, अब एक लाइन मारेगा इसे चारों तरफ का सर्किल मारेगा, आई विल टेल टू गो इन दिस सर्कुलर पाथ, साइकिल में क्या करेगा, आपको धीरे धीरे बेंड करना पड़ेगा, ऐसे बेंड करके आने पड़ेगा, मतलब वर्टिकल से सर्टेन एंगल थीटा में बेंड करना पड़ेगा। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस वन, देखो देखो, दिस इज साइकिल ट्रैक, वर्टिकल से सर्टेन एंगल थीटा में बेंड कर रहा हूं,
बेंड किया. Okay, our intention is to calculate the theta only. कितना theta में लगाना पड़ेगा so that the cycle will stay in circular track. Okay. Now tell me, इस साइकिल के ऊपर what is the forces acting on it? देखो साइकिल का नॉर्मल एक्शन n, नॉर्मल एक्शन, and vertical से this is theta, vertical से this is theta. I am taking two components, n cos theta, n sin theta. This is a circular track. Circular track. घूम रहे हैं. Okay. Now, which one is acting like a centripetal force? N sin theta is acting like centripetal force, right? So that's why n sin theta equal to mv square by r and n cos theta equal to mg. Simply equate किया, divide किया. Divide करने से tan theta आएगा. ये very famous formula है, आपको remember करना पड़ेगा. Tan theta is equal to v square by rg is a formula, very important formula. This formula you have to remember. Tan theta is equal to v square by rg. मतलब in this theta में if I go, the cycle will be going in a circular path. If the theta से ज्यादा कुछ हो गया तो it will not stay in circular path. So what's the difference between this and death well? Which one? ये Bending of डेथ cycles. वेल नहीं है. डेथ वेल बोले तो देखो एक सिलेंडर रूम रहेगा. सिलेंडर रूम में वॉल के ऊपर आपको घूमने का ऐसा. ये वाला नॉर्मल ग्राउंड में आपको एक बड़ा आपका स्कूल ग्राउंड में विल टेल टू रोटेट विद द साइकिल, वो वाला. बट वो वाला क्या है, वर्टिकल वॉल से घूम रहे हैं डेथ वेल में. ओके. So here this angle theta is called v square by rg is a formula. From this also same thing only or different formula. rg gr by mu. Okay, that is different, right? Okay. Tan theta is v square by rg is the formula. We have to remember this formula. Finished? Yeah. Okay. Now turning of a car on a level road. देखो धीरे धीरे आपको लेवल रोड तक आ गया धीरे धीरे. ओके. टेल मी टर्निंग ऑफ ए कार ऑन द लेवल रोड में सेम कॉन्सेप्ट यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड. देखो नॉर्मली आपको जब ओवरऑल में कुछ जाएगा ना, आपको टर्निंग रहेगा ना ऐसा घूमने का. आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द मिनिमम स्पीड आई हैव टू गो सो दैट वी विल स्टे इन ए सर्कुलर पाथ. अगर ज्यादा स्पीड में गया तो क्या होगा, टर्न किया तो क्या होगा. आप एक रिंग रोड जैसे है, व्हेन यू टर्न फास्टर स्पीड में वो कर बोल के चले जाएगा, आउटसाइड चले जाएगा, वो रोड के बाद चले जाएगा, मर जाएगा. सो दैट्स व्हाई दे विल राइट इन ए बोर्ड्स में इतना स्पीड मिनिमम जाओ इसका, दे विल कैलकुलेट एंड दे विल राइट. ओके. सो देखो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ टर्निंग. कितना मैक्सिमम स्पीड आई कैन गो टर्निंग में, उससे ज्यादा स्पीड नहीं होने का. ओके. देखो एक कार है, कार एक लेवल रोड में जा रहे हैं. ओके. Now which force is acting like centripetal force? Friction. Friction. Now equate and solve. Find the speed. So 1 second. Maximum speed means maximum friction should act. अगर ये फ्रिक्शन पे पकड़ के रखेगा कार को, अगर वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मतलब ये स्पीड ज्यादा हो जाएगा, मींस द कार विल गो आउटसाइड आउट ऑफ द For this, won't the friction force be less than equal to mg, right? फ्रिक्शन फोर्स शुड बी Less than equal to mg. लेस देन इक्वल टू mg. भाई mg क्यों, mg का क्यों आ रहा है आपको. सेंट्रिपेटल फोर्स का करो. विच फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रिपेटल फोर्स. Yes. Also, I have to equate. Okay. Now I'm इक्वेट करो. Yeah. Maximum friction is limiting friction, right? Is equal to mv square by r. Okay, this is maximums. Okay, now equate mu n लगा के solve करो. And n equal to mg, you know. कार में So वर्टिकली since I got again v is equal to root mu g by r. mu g r आएगा, by नहीं आएगा. Oh yeah, mu g. Yeah, sorry. Mu n is equal to mv max square by r. N equal mg. Mu mg is equal to mv max square by r. So mm cancel. So therefore v max will be under root mu gr. So, but isn't mu generally tan theta? So can't we write it as gr tan theta? Mu equal to generally y tan theta. So didn't we prove it in that chapter, friction? नहीं वो डिफरेंट है. बट म्यू को जो भी वैल्यू दिया वो रोड का बेस के हिसाब से टायर्स एंड These are roads. So tan theta is equal to mu s. हाँ. tan theta equal mu is okay. That in that which one that is condition is what, किसका angle of friction,
एंगल ऑफ ये वाला म्यू वैल्यू दे देगा, वो यूज करो। एक जुबलीज में जाने समय आपको म्यू वैल्यू भी Oh चेंज yeah, होगा, yeah, yeah. some other रूट में चेंज होगा। ओके, सो म्यू आर जी आर म्यू जी आर वी शुड टेक द दिस मच मैक्सिमम स्पीड यू हैव टू गो, दे विल पुट द बोर्ड राइट। आपको 50 किलोमीटर पर आवर से जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा ये रोड्स में गए तो स्लिप होने के चांसेस है, आपको स्लाइड हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओके, ये वाला सम डिसएडवांटेजेस है, टेल मी व्हाट डिसएडवांटेजेस है ये रोड में, क्या डिसएडवांटेज है टेल मी। इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप क्या करेगा टेल मी, तो इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यू टेल And I मी। won't go on that road anymore. देखो So shouldn't it mean friction greater? आपको रेनी सीजन में फ्रिक्शन रहेगा, इतना ही फ्रिक्शन रहेगा, नो राइट। फ्रिक्शन विल नॉट हेल्प, आप तो लगेगा कि डेली ऑफिस जा रहा हूं मैं 50 किलोमीटर पर आवर में, द बोर्ड में लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर में टर्न करूंगा, ओके अच्छा है। बट बारिश के सीजन ऑल्सो आई विल टर्न 50 किलोमीटर पर आवर में स्पीड में जाके टर्न करूंगा बोले तो आप स्किड हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन बोलेगा मैं एबसेंट हूँ, आज मैं हॉलीडे लगाया हूँ, बाय बाय आप जाओ बोल के। सो ये बाहर निकल जाएगा, आउटसाइड निकल जाएगा, विल फील्ड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो दे थॉट दे मेजरली उस रीजन ओआरआर में वगैरह में दे आर गेटिंग सो मेनी एक्सीडेंट्स। सो देन क्या किया, दे सोचा सोचा सोचा, सो इवन दो फ्रिक्शन इज नॉट देयर, some force should help the car to stay in a circular Oh, path. pseudo force, I guess. No, उसके लिए they introduce the concept of banking of roads. Banking of roads. Roads को इनर एज से आउटर एज का एंगल थीटा एंगल में थोड़ा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने से क्या होगा, दैट ऑल थिंग्स वी विल सी, बट अंडरस्टूड कैसे कैलकुलेट करना, अंडरस्टूड। ओके, so mu rg is a formula. ओके, now banking of roads without friction, मतलब बारिश के सीजन में उस टाइम में आई विच फोर्स इज हेल्पिंग द कार टू स्टे इन ए सर्कुलर पाथ वी आर सीइंग। ओके, चलो, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स बोले तो क्या है, आपको टर्निंग ऑफ ए कार विदाउट फ्रिक्शन में। देखो रोड को मैं थोड़ा ऐसा एक्सटेंड किया, ऐसा रोड को, दिस इज कर्वेचर राइट। सो देखा होगा ना आपको जुबली हिल्स वगैरह जाने समय, ऊपर जाने समय जूम बोल के ऐसे ऐसे जाएगा आप। ओके, भाई थोड़ा लेवल ऑफ द रोड इनर एज से आउटर एज से कंपैरिजन में थीटा एंगल में रेज किया, भाई देखो नो, नो मान लो देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, इस कार के ऊपर व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वन इज mg। ओके, एंड ऐसा है ना, ऐसा है ना, नॉर्मल एक्शन विल बी लाइक दिस, सर्टेन एंगल देखो, ये सर्टेन एंगल थीटा में, राइट, समझ में आ रहा है। No. Now tell me, what is the component of n ka? Isra component is n cos theta, Yes, n sir. sin theta. Now, with which force is acting like centripetal force? Which force is helping to stay in a circular path? And sin theta. N sin theta. Even though friction is not there, n sin theta is helping to stay in a circular path. That is specialty. That is specialty. Okay. So समझ में आ रहा है ये वाला, ये mg लगा के if I do the So the geometry part same I'll thing, get right? theta You here. get tan theta as v square by rg only. हाँ, so now देखो n sin theta is equal to mv square by r, n cos theta equal to mg, I equated and I divided, we got tan theta is equal to v square by rg or v equal to under root rg tan theta. Very famous formula told that cycle का भी same ही आया ना, v square by rg is a formula. This theta is called angle of banking. Angle of banking. They will ask what is the angle of banking. The what angle I should raise the road so that the car will stay in a safe position means the theta we can find by using this v square by rg. They'll give maximum speed I want to go in this road is this much and radius of the road is this much. If you substitute that angle you have to find and that much you have to road से construct करना पड़ेगा आपको, उतना angle. So v square by rg is the formula we have to find. Got it? Copy it.
दैट टाइम नो प्रॉब्लम, फ्रिक्शन नहीं रहे तो बारिश के सीजन में फ्रिक्शन ही नहीं है, बहुत बारिश हुआ फ्रिक्शन ही नहीं है, टायर बहुत स्लिप हो रहे, देन ऑल्सो एन सैनिटाइजर इट इज एक्टिंग लाइक हीरो, ये पकड़ के रख रहा है, मैं हूँ, मैं हेल्प करूंगा, आप जाओ बोल के जा रहा है, दैट इज हेल्पिंग। ठीक है, इसके सपोज इफ यू कैलकुलेटेड यू गॉट द स्पीड सम 40 किलोमीटर/आवर, मुझे एन साइन थीटा है बोल के आप 50-60 किलोमीटर में टर्न किया तो क्या होगा, एन सैनिटाइजर बोलेगा बाय बाय, मैं तो 40 तक रुक सकता हूँ, उसके बाद आप जाओ बोल के बोलेगा। ओके, सो इट विल फ्लाई अवे कार का। ओके, नाउ आई विल कंबाइन फ्रिक्शन भी, मतलब बारिश का सीजन है तो फ्रिक्शन भी रहेगा ना, फ्रिक्शन भी रहेगा, दैट विल सी। ओके, कॉपी इट, फॉर्मूला याद रखो, tan it is v square by rg और v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा इज अ फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा, हाँ करो, जे मींस क्वेश्चंस का आई एम गिविंग and tell the answers. A circular track has a radius of 10 meters. Until do question is right. Easy question. 10 meters. If the vehicle goes around an average speed of this much, what should be the proper angle of banking? Tan it up and karo, that's it. So tan inverse 1 by So 4. tan inverse 1 by 4. Yes. So tan theta is simply v square by rg. Substitute, you will get the angle of banking. Hi, Krishna. Yes. Let's go. This is 2023 question. J means I'll give options. Try to do. So they gave the friction as 0.34 or the mu as 0.34. देखो, road is the friction between the tires and the road is coefficient of friction given, mu value is given. Okay. Mu value is 0.34. A car is moving in a horizontal curved road, without banking, right? With the radius is much, the approximate maximum speed of the car b. Fine, v fine, we know the formula, right? Use the formula and solve. Tan theta equal to v square by rg. Subsequent multiply karo and sum. So 13. Yes, 13 is I answer. think root 170. So that's Root 170 approximately is 13. आया, so you can use, वो थोड़ा आपको फ्रिक्शन करने समय भी आएगा, बट आपको कितना है, टेल मी, फॉर इज फॉर्मूला यूज कृष्णा? So it'll be Under n root sin mu theta plus rg. mu n equal to mb V square max by is equal r. to what formula use कृष्णा? Under root Under root mu rg. mu rg you can use formula, mu rg is a formula we get. Okay, 13 आया आपको प्रणव? Yes, sir. Yeah, हाँ करो. So if you have to give the condition, right? Condition only, I'll give options. Hmm. 2022 में पूछा, you use करो whatever you wanted to do. So A disc of flat bottom beaker placed at the same thing. The question of friction is angular velocity से घूम रहा है, static friction is given. The beaker will revolve with the disc. If I got D.
R should be greater than equal to mu g by omega square. R is great lesser than equal to, right? So greater than Greater than C या D. D या ओके देखेंगे. Friction force when is rotating around, the friction force should be less than that, this one, greater than should be there. Tell me. Less Friction than. force. So friction force should be greater than equal to mr omega square, Why greater than? right? So why greater So, than? why greater than now? अगर friction inside वाला force is less than mr omega square, क्या होगा? Then क्या होगा? It will fly Oh, away. yeah, understood. So that's why always friction should maximum, मतलब पकड़ के रहने वाला friction should be lesser than equal, greater than equal to mr omega square. Then the answer will only- be B. B is answer. No, subscribe. Friction is mu n. Mu n is mg. Mu n के जगह में mg is greater than equal to mr omega square. So cancel. So mu g by r is greater than equal to omega square. So when I turn this side, क्या होगा? R is less than equal to mu g by omega square, right? See, mu g by omega square is greater than equal to r. उल्टा turn किया तो greater than will become lesser than. Okay, आया? This is answer. Next. Now banking of rods with friction. Banking of rods with friction. मतलब रेज किया ना, इसमें दो केस करने वाला है. दो केस करने वाला है. We will see. If the speed of the vehicle is greater than design speed of banking, क्या होगा? Incline plane में देखो, incline plane में when the speed is greater than the design speed, so it will slide up. फास्ट में टर्न कर रहे, सपोज यू आर रनिंग टू फास्ट में मोर देन द डिजायर्ड स्पीड, देन द कार वांट टू फ्लाई अवे. So at that time, what will, which friction, backside friction will be acting in the opposite direction. So friction will be acting like this. So मैं दो केस में पढ़ने वाला है. One, the speed अगर ज्यादा है तो the car want to slide away, उसके वजह से friction act हो गया पीछे. So over here we get n cos theta is equal to mg plus f sin theta. Now इसका and to the components f cos theta, f sin theta, n तो नॉर्मल मालूम है ना, n cos theta, n sin theta दोनों. Now we'll write the equation and we'll try to find the maximum speed, the speed we are trying to find. Okay, देखो, to find the maximum safe speed, equation बना सकते हैं ना, which force is acting like towards center वाला, n sin theta, एक ऐसा है ना कर्वेचर. So n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. Centripetal force, net force is equal to centripetal force. And दूसरा n cos theta, देखो, n cos theta minus f sin theta equal to mg. That or I can tell like this, n cos theta equal to f sin theta plus mg. f sin theta को इस तरफ लेके आया. Okay, upward force equal to downward force equal किया. Now if you solve these two equations, we'll get one result, that is the maximum speed. वो formula भी ऐड करना पड़ेगा. Banking of roads में people क्या करेगा, they'll understand the meaning, but वो formula बैठ नहीं किया तो गया काम से. Formula बैठ करना पड़ेगा. Formula याद है किसी को? Maximum speed कृष्णा, banking of roads का वो formula बैठ करने है तो marks जाएगा. Formula बैठ करने. So do we Sir, it's under root mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta. हाँ, मरे याद नहीं बोलते थोड़ा तो सोचो. ओके, ज्यादा थिंकिंग नहीं करते तो हीट हो जाएगा ना ब्रेन, इसलिए थोड़ा ज्यादा सोचेगा नहीं ना. ओके, कॉपीड. ये हो गया तो एक ही नेक्स्ट क्लास में we'll try to finish vertical circle हो जाएगा. सो बैंकिंग ऑफ रोड्स करने समय नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो हेल्प. अगर नॉर्मल डेज में फ्रिक्शन आल्सो विल हेल्प.
दोनों पकड़ के रखेगा उसको, कार को स्लाइड नहीं होने देगा, एक्शन विल बी रिड्यूस्ड। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद विल गेट द आंसर एज दिस वन, मैक्सिमम स्पीड इज अंडर रूट आर जी इंटू tan eta प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan eta। लिखो आर जी इंटू अंडर रूट, देखो मैक्सिमम मीन्स बॉटम में मिनिमम रहेगा ना, वो याद रखो, 1 माइनस म्यू tan eta। So will this formula work for every banking of road question with friction? Every bank of roads with friction, maximum speed I'm asking. Whenever they ask Yeah, maximum sure. speed, it's done. Yeah. Now same way second case में I am going normal से कम स्पीड है, देन क्या होगा, आपको थोड़ा नीचे स्लाइड होगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज सेकंड केस। देखो बेटा, हाँ, तो देखो इफ द स्पीड ऑफ बैंकिंग इज लेसर देन द डिजाइन स्पीड, देन क्या होगा, आपको कार नीचे स्लाइड होगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगेन इसको कंपोनेंट्स ले लो, एफ कॉस थीटा एफ sin थीटा, अगेन इफ आई फॉर्म द इक्वेशंस विल गेट लाइक दिस। Okay, n cos theta plus m f sin theta equal mg, n sin theta minus f cos theta equal mv square by r, because net force is acting towards center, right? So n sin theta minus f cos theta, net force is equal to mv square by Won't r. the answer be root gr into mu tan theta minus 1 by mu plus tan theta? Yes, 1 plus आएगा नीचे। Okay, so rg into tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta. This is a formula we have to by heart. Yes, तो madam. मेंशन करेगा क्या है मिनिमम स्पीड, क्या है मैक्सिमम स्पीड, क्या है, ये सब कुछ मिनिमम स्पीड में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस बैंक कंप्यूटर्स। सिस्टम पार्टिकुलर रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लर्न करना पड़ेगा, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विल बी कमिंग, वही हार्ड चैप्टर 11th क्लास में कंप्लीट, 11th क्लास में दैट इज ओनली आफ्टर सिस्टम पार्टिकुलर रोटेशनल मोशन होने के बाद एक इजी चैप्टर्स ओनली, ग्रेविटेशन, दिस ऑल दैट फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स ओनली, बट ये वाला तो बड़ा है। ओके, So by next week we can finish circular motion. ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास डन, नेक्स्ट क्लास में डन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन करो खत्म, जे मेंस क्वेश्चन, मतलब वी हैव टू टेल व्हिच वन इज ट्रू, व्हिच वन इज फॉल्स, understood. दैट्स इट। So cyclist is moving around the unbanked road, मतलब normal road में, if the speed is much, shake a sharp turn लिया, radius is much, reducing the without reducing the speed, static friction is given, the cyclic will not slip, pass over करो, मतलब at that time में try to find a speed। So फॉर्मूला मालूम है ना मैक्सिमम स्पीड का, अंडर रूट म्यू आर जी फॉर अनबैंक्ड रोड्स का, that speed should match with this one। So for this we have to take it as mu, like Fc is equals to frictional force, because we have to find the minimum speed, right? फर्स्ट क्वेश्चन है टेलिंग, सेकंड क्वेश्चन Sir, first. फर्स्ट वन में देयर इज नो बैंकिंग, ओनली नॉर्मल लेवल रोड में जा रहे हैं, नॉर्मल लेवल में टर्न कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम व्हाट इज द फार्मूला, मैक्सिमम स्पीड फार्मूला कितना होगा, Why do you have to find maximum, sir? That's what I don't understand. अंडर रूट म्यू आर जी। So why we're taking maximum speed? Why? Because आपको he is not slipping, he is not slipping, there is a maximum speed में he is not slipping, we have to check whether it's true or false, so आपको maximum speed find करो, and that speed is less than speed or the speed or that speed of Then for minimum it will slip, नहीं सी आपको मिनिमम स्पीड में स्लिप नहीं होगा, देखो नॉर्मल स्पीड में देखो टर्न करने समय आप धीरे जाएगा, वैसे स्लिप होगा, नो राइट, थोड़ा फास्ट जाएगा, स्लिप नहीं होगा,
मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा करे जा गए तो स्लिप हो जाएगा. Okay, So we are understood. finding the limit, that is maximum speed. So Here kilometers per hour is there, meters per second में convert कर लो, so that आपको convert कर सकते. First one is true or Can I false? take GS 10, sir, instead of हाँ 10 9.8? only, 10 only ले लो. So then we'll get 2 कौन सा 2 आया? Okay. as maximum But speed. speed इधर कितना था? 35 by 18. That's 1 point something. So it is less than, right? Yeah, So statement 1 is true or false? true. true, He will not slip with this speed, true. right? He will not slip, right? Yeah. Yeah, true. I said second one भी find करने. Now ये वाला क्या है? The road is banked with 45 degrees. Theta is given 45 degrees. Cyclist has to cross the curve 2 meters radius with a speed of this much, without slipping. So we can just write V is equal to mu RG tan theta, right? Mu RG tan theta कैसा यूज करेगा? ये बैंक रोड्स Yeah. का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड फाइंड करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा. देन ओनली इन दिस रेंज में द स्पीड है तो देन ओनली वी कैन से ही इज गोइंग विदाउट स्लिपिंग वाला. So So if we what convert is 18, mu? Mu is same. We can take as mu as same, that is 0.2 दिया ना, that one only. Approximate answer you can take 18 लेके थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. so can we take it as 18? हाँ ले लो, चेक करो. सो आपको मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड फाइंड करके दैट स्पीड के विद इन रेंज में है क्या नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा है तो स्लिप करेगा, मिनिमम स्पीड से कम किया तो भी स्लिप करेगा इन दिस बैंकिंग ऑफ रोड्स में. So I have to find both. हाँ बहुत क्या करना पड़ेगा. जी में 2021 में पूछा. Yeah. Sure, it will slip. हाँ इट विल स्लिप. ट्रू और फॉल्स इसमें? It's false. नो रॉन्ग. द साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप आएगा. भाई वी मैक्स कितना है अप्रोक्सीमेटली? Greater than 5. 5.4 समथिंग आएगा. मिनिमम स्पीड इज 5.13 आएगा. इसमें चेक करो किलोमीटर पर आवर टू I मीटर got minimum speed as 4 point something. नहीं मिनिमम स्पीड यू गेट एज 5 पॉइंट समथिंग, 5.13 आएगा. Oh wait, That sir, is- I didn't see that tan theta is 1. एंड यू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. कृष्णा ये वाला कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली चेक करेगा. उसमें कैलकुलेट किया तो विल गेट एज 5.13 आएगा. देखो Yeah. मैक्सिमम स्पीड So you got Vmax as is greater 5.47, minimum speed you will get as 3.65, sorry 3.65 आया. Okay, now the speed if you calculate in meters per second you get as 5.13. now देखो it is within the range, right? Within the range means it will not slip. It won't slip. So this also statement is true, so both are true. तो मैं तो कैलकुलेशन ज्यादा दिया वो, ऐसे थोड़ा पेपर लेंदी बोलेगा. पीपल आने के बाद वो आउटसाइड में यूट्यूब में देखेगा ना क्या कैसे पेपर मींस पेपर कॉन्सेप्ट इजी ओनली बट लेंदी है बोल तो ये